गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको एक नए लेक्चर और के साथ और नए टॉपिक के साथ हम आज उपस्थित हैं यहाँ आज के वीडियो लेक्चर में। और आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स के जो टॉपिक्स पढ़े थे वो सारे के सारे आपके सिलेबस से संबंधित थे। और अभी भी आपका कुछ टॉपिक्स इस यूनिट में बचे हैं, इस मॉडल में बचे हैं जिसको पढ़ना है। तो आइए हम आपको बताते हैं अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर्स। आपका एक आज का टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर्स। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर्स के बारे में जानना है। एक्चुअली कोई भी मेजरमेंट करते हैं, सपोज यू आर गोइंग टू मेजर length of a room, length breadth of anything is you want to measure। और ऐसे में आपका जो इंच टेप है वो डैमेज है, टेढ़ा है, थोड़ा सिकुड़ा हुआ है। तो जो आपका मेजरमेंट जब करेंगे उस किसी भी थिंग की, किसी रूम की लंबाई की या लेंथ की या ब्रेथ की, तो वो आपका एग्जैक्ट लंबाई नहीं प्राप्त होगी। तो ऐसे में जो एरर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना हम एरर कैसे हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे उस एरर को, ये हमको पढ़ना है। उसके मैथमेटिक्स से रिलेट करके उसको पढ़ना है कि कैसे हम उसका एरर आपको अप्रॉक्सीमेट कर सकते होंगे। एक्चुअली मैं आपसे बताऊं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ मेजर करते हैं लेंथ, तो वो तो आपको किस पर डिपेंड करता है। लेंथ जो होगा वो डिपेंड करेगा जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर करते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो लेंथ में भी एरर होगा। और उसी एरर को बांटने के लिए हम जानने के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे हम सपोज कर लीजिए, लेट let us suppose let us suppose uh, we are going to measure a quantity x, and by mistake by mistake it is measured x plus delta x। मान लीजिए आप कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने जाते हैं, x कोई क्वांटिटी है, उसको आप मेजर करने जाते हैं और गलती से आपने मेजर कर लिया x प्लस डेल्टा एक्स, देन डेल्टा एक्स इज कॉल्ड एरर। ये डेल्टा एक्स कहलाता है एरर इन एक्स। तो डेल्टा एक्स को कहते हैं एक्स में एरर है। नाउ वी वांट टू अप्रोक्सीमेट दिस एरर। हाउ विल यू अप्रोक्सीमेट दिस एरर? कैसे आप इस एरर को अप्रोक्सीमेट करेंगे, ये जानने की इच्छा है और हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे में जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज इफ y इज डिपेंडिंग ऑन x, y इज फंक्शन ऑफ x, ये इसका ये मतलब होता है, मीन्स दैट y डिपेंड्स ऑन x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x में कोई भी एरर आए तो y में भी एरर होगा। लेट देयर इज an error delta x in x, and x changes to
x plus delta x. Corresponding to this error, corresponding to this error, delta x in x, we suppose there is an error delta y in y, and so y changes to y plus delta y. Then what is going to happen? In that case, in this situation, we can say, in this situation, we find y plus delta y is equal to f of x plus delta x. Because corresponding to error x plus delta, suppose you have already taken delta x is an error in x. So x is changes from x to x plus delta x. And corresponding to that change, there is a change. Of course, we can say there is an error delta y in y. So y is changes to y plus delta y, and the relation y is equal to f of x is now becomes due to error delta y in y and due to error delta x in x. This becomes y plus delta y is equal to f of x plus delta x. Let me find what is the approximation of this error. So we can write this delta y is equals f of x plus delta x minus it is y, or we can say y is equals f of x plus delta x minus y means fx. When we take delta y upon delta x, you will find here it is f of x plus delta x minus f of x upon delta x. But what is going to happen since delta x is very small, एरर तो होता है वो बड़ा नहीं होगा, एरर हमेशा छोटा ही होगा, बहुत छोटा होगा, क्योंकि गलतियां जो होती हैं खास करके मेजरमेंट के लिए वो आपकी बहुत छोटी गलती होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी लंबाई रूम की नापने चाह रहे हैं आप और इंच टेप आपका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इतना हो सकता है कि लंबाई अगर 10 फीट की है तो वो 9.9 फीट नापे। इस तरह से आपका मेजरमेंट हो सकता है। तो एरर जो होगा वो वेरी लेस ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट, ये कम होता है। तो ऐसे में हमने दिया कि डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल है। सो दैट इज डेल्टा एक्स वी कैन से इज टेंडिंग टू जीरो। So limit we can say delta x tending to 0, delta y upon delta x is equal to limit delta x tending to 0 f of x plus delta x minus fx upon delta x. And so this is nothing but it is a delta y upon delta x limit delta x tending to 0 is equal to f dash of x. You know, it is a differentiation first by first principle. It is a differentiation of fx. But this is just you are going to find the approximation of error in y. So how will you find the approximate? So we can write here when the limit is taken out. So this implies delta y upon delta x is equal to f dash x approximately. And in this situation, we can say delta y is equal to f dash of x into delta x. And what is delta y? Delta y gives the approximation of error. Delta y is equal to f dash of x into delta x. This gives the approximate error in y corresponding to
corresponding to error in x, corresponding to error in x. So delta y is equal to f dash of x into delta x. This has been already taught in your 11th, 12th classes. I think in the application of derivatives has been taught in your class 12 of CBSE board as well as UP board, whatever may be the board. But application of derivative has been taught in class 12. When we look at this result, delta y is equal to f dash x into delta x, which is nothing but it is approximate error in y, it is delta y, and this has been derived by corresponding to the error delta x in x. And we can say, or we can write delta x upon x is the relative error in x. Relative error in x. In x. Number 2, delta x upon x into 100 is percentage error. Error in x. These two are the very important. Whenever you are going to find the percentage error, whenever you are going to find the relative error, so you can use this result to find. Now let me discuss some examples. Through the examples we can get the, just I am taking some example. The period of simple pendulum, suppose I am just taking an example. The period of simple pendulum is given by t is equal to 2 pi root L by G. Just I have taken this periodic is given. Find the maximum percentage error in T due to, find the maximum percentage error. Find the maximum percentage error uh, due to, find the maximum percentage error uh, due to in T, sorry, in T due to the possible errors in T, error in capital T due to the possible errors due to the possible errors uh, up to 1% in L and 2.5% in G, up to 1% in L and 2.5% in G. So this problem is a very simple problem. I think it has been taken in class 11, 12. Today, just our aim is to just revise because here, as per your syllabus concern, we are going to study the approximation of errors of the functions containing more than two variables, two or more than two variables. So first of all, we have to revise your learnings of class 12, which has been taken the approximation of errors of a function of one variable, and then after you go for the second function of two or more than two variables, errors approximation. Now here, when we look at the question, what is given? You look at the question. The period of simple pendulum is given by t is equals to pi root L by z.
You want to find the maximum percentage error in T due to the possible errors up to 1% in L, whereas 2.5% in G. So, in the solution, you must write what are given the results. Given that, T is equal to 2 pi square root L by G. This is taken as equation number 1. And 1% is error in L. Error percentage error in L. Percentage error in L is equals 1%. 1 means, what does it means? Means delta L upon L into 100 is equals 1, or we can say dl upon L into 100 is equals 1. The percentage error in G is equals 2.5. So मीन्स इसका ये मतलब निकलता है कि डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इज इक्वल्स 2.5, यू कैन से, और डी जी अपॉन डी जी इंटू 100 is equals 2.5. This is taken as equation number 2 and this is taken as equation number 3. Here is the result. You want to find the percentage error, maximum percentage error in T. And you want to find to determine maximum percentage error in T, that is आपको निकालना है डी डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 की वैल्यू, ये मैक्सिमम कितना होगा, इज हाउ मच, या हम कह सकते हैं डी टी अपॉन टी इंटू 100 मैक्सिमम, ये आपको निकालना है. यू वांट टू फाइंड दिस रिजल्ट. अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो ये देखा जाए कि हमारा जो दिया है 1 2 3, उसके हाउ व्हाट इज द स्ट्रेटजी adopted by you to get the solution, meaning thereby you get the result delta t upon t into 100. For this purpose you just must, जब भी आपका इस तरह का हो तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे पास रिजल्ट का रिलेशन दिया गया है एल और जी में, इस रिलेशन में लॉग ले लीजिए आप. तो आप हम जा रहे हैं, आई एम जस्ट टेकिंग द लॉग इन द इक्वेशन 1. जब लॉग लेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखें. यहाँ आएगा लॉग टी, यहाँ लिख दे रहे हैं टेकिंग लॉगरिथमिक इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू लॉग 2 पाई प्लस 1/2 log L माइनस log G, log L माइनस log G. तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसको डिफरेंशिएट किया जाए, डिफरेंशिएटिंग एबव, तो log t क्या होता है 1/t और t क्या हो जाएगा dt, इसका हो जाएगा 0, 1/2 L का हो जाता है dl अपॉन L माइनस dg अपॉन G, यही होगा. तो अगर हम यहाँ पर dt अपॉन t लिख दें और यहाँ लिख दें 1/2 और ये dl अपॉन L माइनस dg अपॉन G, और वी कैन से dt अपॉन t इंटू 100 and is equal to 1/2 dl upon L into 100 minus dg upon G into 100. Actually, for the maximum T, maximum or minimum is depending on this sign.
This sign, if negative, gives the minimum error in T. If this is positive, then it gives the maximum error in T. Only there are two possibilities to get the minimum and maximum depending on this sign. Because this has been subtracted from this. If it is plus, then it becomes maximum. If it is minus, then it becomes minimum. So for the maximum error, for the maximum percentage error, we have dt upon t into 100 is equals 1 by 2 dl upon l into 100 plus uh, dg upon g into 100. And so it is now 1 by 2 dl upon l into 100 is 1 plus dg upon l into 100 is 2.5. So here is 3.5 upon 2, and it is I think 1.75, and this is 1.75 is the percentage error, you can say. Thus hence 1.75 percentage is the maximum error in T, and this is the answer. So in this way, we can solve the several questions based on this topic, and the next topic we will discuss. But I want to take some other examples. Just I am taking another example, very simple example. Just I'm here taking. I am taking another example number 2. Find the percentage error in the area of an ellipse. Find the percentage error. Find the percentage error in the area of ellipse when an error plus 1%, when an error plus 1% is made in measuring the major and minor axes. Is made in measuring the major and minor axes. ये क्वेश्चन है। आपको ये शायद पता होगा, you know well. I just I'm taking here an ellipse. Here is an ellipse, and this is taken as a comma 0, and this minus a comma 0, and this a dash a, here a dash is length of major axis, and here is 0 comma b, and here is 0 comma minus b, and this is suppose b, and here is b dash. So this is b dash is length of minor axis, and this equation of ellipse is
x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. This is, you know, very simple. It has been taken. There is no need to draw the figure. But due to your, uh, it can be made easy to understand. Just I have taken into consideration what is the, I have shown here what is the major axis and what is the minor axis. Length of major axis is always 2b, whereas length of minor axis is 2a. And now look at the question. You know, area, area of an ellipse, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is a is equals pi ab. This is the area of an ellipse. Area of an ellipse is a is equal to pi ab, where a is the length of my semi minus, where small a is length of semi major axis and small b is length of semi minor axis. तो ये हमारे पास, सॉरी मिल गया हो तो मगर ये है ना झोंक में आदमी देखो ना length of semi major axis and b is the length of semi minor axis, because 2 is the length of major axis and 2 is the 2 is the length of major axis and 2b the length of minor axis. So small a and small b are the length of semi major axis. You want to find the error, the percentage error in uh, area of ellipse when error plus 1% made in measuring the major and minor axes. So what is given here? Given that dA upon A into 100 is equals to 1%, and dB upon B into 100 is equals to 1%. This is given. And so taking logarithm, logarithm, and then differentiating equation 1. Equation 1 we get dA upon A is equals to 0. D small a upon A plus D small b upon B. And so we can write here dA upon A into 100 is equals to D small a upon A into 100, whereas dB upon B into 100, it is given 1%, it is given 1%. So dA upon A into 100 is 2, which shows the percentage error, in A, area of ellipse, is 2% due to error, due to percentage error 1% in major and minor axes of ellipse. So this is the answer. So finally 2% is the answer.
I think it is better to know about your error approximation, or I think I got satisfied because I have explained this has been uh, studied by you in class 12th, error and approximation. Now, in the next video lecture, our plan is to study, to learn how, if a function you are given a function of two variable or more than two variable, then what is the procedure to get error in the function of two variable, and how will you approximate this error? We shall discuss in the next video lecture. I think again, I just convince you and motivate you so that you please continue your study, and in this COVID-19 pandemic, you have to be serious about it. टिल देन, जब तक कि आपके पास वैक्सीन ना आ जाए तब तक आप जो है इसको सीरियसली लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और इन दैट सिचुएशन यू विल गेट बेटर रिजल्ट फॉर योर गेटिंग मैथमेटिक्स. थैंक यू. थैंक यू.